जी, अस्सलाम वालेकुम. Uh, I'm Ayaz here, and we are going to discuss this October number 2022 paper 23. It was a tough paper, so I have decided to go for that paper for discussion. So let's see what are the main points in that paper. Um, this question number one, as I already told you people that these papers are basically the papers related to your um, structured questions. These are called structured questions. So in structured questions, the portions are from general physics, then waves and current, electricity and electronics, and that general physics is divided into several parts. So here is one question number one. It is related to general physics part, measurements and physical quantities. Okay, so if I say that uh, the rate of flow, the question examiner is asking basically the rate of flow q of a liquid along a narrow pipe of the length L and radius R is given by q is equals to alpha R cube, alpha R4 divided by L, where L is the constant, right? So whenever you are going to consider these questions, we have to read that script very carefully, that what are those physical quantities, because symbols do not have any constant configuration. The symbols can be changed. Okay, so here the q is the rate of flow. It is mentioned over here. So q is that alpha is a constant, r is your radius, L is your length. So we can consider these all over here, and an experiment is carried out to determine the value of alpha. The data from the experiment is experiments are shown in the table. So this is your table, and in that table we are going to show the values. Q is given to us, R is given to us, L is given to us. Use the information in table 1.1 to show that the SI base unit of alpha is second inverse. So we have to use that information. I mean, this physical quantity, unit of this, unit of this, and that all. So if I say that over q is equals to alpha r cube divided by L, so I have to make this alpha as a subject. So it would become ql divided by r4. Sorry, here r is 4, so r4 is there. So q, unit of q is meter cube second minus 1, and L is, meter, so its unit is meter, and R is a distance, so its unit is meter, so it is meter power 4. So when you will just cancel this out, so m3 and m, this makes m4, and that m4 would be cancelled by the m4 in the denominator. So you have second inverse, that is its unit. Okay, then in next part it is asked, show that the percentage uncertainty in the alpha is 15%. So as I made this alpha subject over here, so it is obvious for in this description that alpha depends upon three physical quantities, q, r and L, and for all those we are having their percentage uncertainties. And when we are going to address the uncertainties, definitely we have to consider their power. So in percentage uncertainty in alpha, percentage uncertainty in alpha, that is equals to, that is due to basically percentage uncertainty in q plus percentage uncertainty in L plus 4 times percentage uncertainty of r. The reason behind that is that r has 4 power. So here we are having these percentage uncertainties, all of these are given to us. So percentage uncertainty for q is 3, percentage uncertainty for r for L is 4, and for r it is 2. So I have just multiplied this with 4. So 4 2s are 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15. So we have 15% uncertainty over here, right? Is this I hope that it would be clear to you. Then the next question is, calculate alpha with its absolute uncertainty. Give your answer to an appropriate number of significant figure. So what to do over here?
I have to calculate alpha to an appropriate number of significant figures. Actually, my target is delta alpha. It is absolute uncertainty in the alpha. So as you know that in these type of cases, what do? We consider that delta alpha, I mean absolute uncertainty in the alpha divided by value of alpha is equals to whatever the percentage does it have, it is 15%. Okay, so you can write that 15% is basically the number of this the percentage uncertainty in alpha. So percentage uncertainty in alpha means, that is delta alpha divided by alpha times 100, that is equals to 15. So I would like to write this in this way. There are two ways to write this. Fractional uncertainty is basically delta alpha divided by alpha. That will be equals to, if I say this is 15%, that will be 15 divided by 100. So it would be 0.15. So from here it would be very easy for me to handle this question, that delta alpha is basically 0.15 times the value of alpha, or in other words you can write that delta alpha is equals to 15% of value of alpha. So my first target is to calculate alpha. So what will be alpha over here? Alpha is, just put the values back. Alpha is ql divided by 4, ql divided by r power 4. Just place the values of that. Q is your the value of q is given to you. It is 2.72 into 10 raised power minus 8, regardless of the units, because we have no need to write units along with that. Then L is 2.5 exponent minus 2, 2.5 exponent minus 2, and divided by, you will write about r. R is your 7.1 exponent minus 5. 7.1 into 10 power minus 5. This all would have a power 4. So when you will calculate this all, after calculating, you will get a number over here. It would be almost 2.7 into 10 power 7. Okay, so this is that number, which is basically alpha. So here, after this all, I would use this number in this equation actually. So sorry for inconvenience, I don't have some space over here. I have written in very big font. So delta alpha is equals to 0.15 times 2.7 exponent 7. So you will get that number almost 0.43 into 10 raised power 7. That is your delta alpha. So when I would use this to one significant figure. So one significant figure means I have to use only 0.4 into 10 raised power 7 over here. So no need to write directly in this way. What can you do? You actually you are you are having the value 0.4.3 uh, something into 10 power 6, right? So I have just converted into one significant figure over here. So that is your delta alpha. So when you are going to write the answer, so your answer would be written as alpha plus minus delta alpha. This is the final format for your answer. So you can write in this way, because you have one significant figure with one decimal place over here, and is one decimal place. So simply speaking, your answer would be 2.7 into 10 raised power, because it has 10 raised power 7 at the output. I mean in multiple of these values. So I would write 2.7 plus minus 0.4. So this will be basically 3 marks uh, rewarding calculation. So if you will calculate in this way, right, it's fine. Here I just made you people clear that either you have this method, or you have this method, or you have this method. So you can use any of them, right? Just go by any one and your answer would be correct for all of these. Okay, I hope that it is clear to all of you. Now let's talk about question number 2.
So in question number 2, yes, Ahmed Munir, Tawseek Haider, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक। Tawseek, गुड। ठीक हूँ सर। कैसी हो बेटा, खैरियत? गुड। अच्छा, ओके। तो ओके, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों ने कैलकुलेटर अपने पास रखना है, ठीक है? ओके। ओके सर। अच्छा, तो सेकंड पार्ट है मेरे पास, that is related to your kinematics. Okay, kinematics में this question is basically from this velocity time graph and further calculations from velocity time graph. So the engine of a toy rocket pushes gases vertically downwards, right? For example, आपके पास एक toy rocket है and you are going to push the gases are pushed downward. Gases ये आ रही हैं, and definitely the rocket will be pushed upward. Okay, rocket will be pushed upward, and this results the rocket in accelerating vertically upward from the ground. The rocket starts to move from rest. Important information इसको underline करना हमने. Starts from the rest at time t equals to 0. The variation with time t of the vertical velocity v on the rocket for the first 0.3 seconds of the flight is shown in the figure. आपके पास क्या जिस given है? We are given with velocity time graph or variation of velocity with respect to time for first 0.3 seconds of motion of the rocket. So first of all, what are important features of this graph? First important feature of the graph is that if we are interested in acceleration, that acceleration is basically the gradient of this graph. Okay, so when this is equals to gradient of the graph, so check this one out, that we have a uniform gradient. Uniform gradient है ना आपका graph का? If we have a uniform gradient, it means the acceleration is uniform. Okay, secondly, your body is starting from rest. It starts from rest, origin से start हो रहा है. Okay, so let's talk about the questions. क्या पूछ रहा है हमसे? As the rocket moves, the thrust force T provided by the rocket engine is 16 Newton. Engine की जो thrust force है, which is basically pushing the rocket upward, that is equals to your 18 Newton. ठीक है? Assume that the mass of the rocket is constant for this part of the flight. Assume that the air resistance is negligible. These all are basically assumptions. Assumptions का मतलब ये होता है कि we would have some variations, but we will consider that okay, these are according to the given situation in the ideal condition. For this part of the rocket flights, show that जब भी show करना होगा तो you have to mean calculate till that answer, that acceleration of the rocket is equal to 55 meter per second. कितना acceleration है इसका? 55 meter per second. So as I told you that for this is 1 mark question, so it means that it does not have a difficulty beyond it. अब देखो, मैंने आपको बोला कि this graph is velocity time graph, so its gradient will give you the acceleration. So best description for the gradient is, आप कोई ऐसी points ले लीजिए where the graph is having a corner. Like corner का मतलब मैं आपको बता दूं, this can be 1 point. You can take 1 point over here, right? यहाँ से आप एक point ले सकते हो. Then you have this point. Yes, these are the 2 points जिनको आप consider कर सकते हो. Other points can be, yes, this can be a point which can be considered for the gradient. तो ज्यादा अच्छा ये होता है कि you have to take that point which gives you
a large number or large area of the gradient grids. तो आपके पास अगर हम लोग ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लें, let's say this one for the whole line, so what will I have? I will have the grid like this. तो इस ग्रिड का अगर आप ग्रेडियंट निकालोगे, so what will be the gradient? Gradient will be rise over run. So final value is just आपने यहाँ से इसकी final value चेक करनी है. So your final value is this way. What is its final value? this point टाइम की वैल्यू मुझे मिल जाएगी. इनिशियल वैल्यू इज 0. सो ये आपके पास y1 की वैल्यू 0 है एंड y2 की वैल्यू हमने देखनी है. सो इट इज 15, 16, 17, 18. सो इट इज 18 मीटर पर सेकंड. दिस इज योर y2. सो आप कैलकुलेशंस करिए. दिस इज योर x1, दिस इज योर x2. तो ग्रेडियंट आपके पास कितना हो जाएगा? ग्रेडियंट को कैलकुलेट करने के लिए we just put that gradient is equal, sorry, acceleration is equal to, because he is talking about acceleration, so acceleration is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So here we go. आपके पास y2, I told you about y2 is 18 meter per second and y1 is 0. So 18 minus 0 divided by x2 is this point, so which is 0.30 and x1 is 0. So we can consider that 0.30 minus 0. So calculations करेंगे जरा. सर 60. सर ये No, 18 नहीं मैंने है, ये वैल्यू 16 थोड़ी सी गलत लिखी है. Sorry for that. It is 16.5. This value 16.5. Sorry, 16.5 है मेरा ख्याल है. Is that it? जी सर. चेक करिए. हाँ 16.5 है. यस एग्जैक्टली. तो 16.5 पे आपने इसको डिवाइडेड बाय 0.3 स्क्वायर. ठीक है ना? तो दिस इज फॉर 1 मार्क. आप देखो 1 मार्क इज, इट्स सेम्स के बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन आपको पहले वर्किंग करनी पड़ती है. देन वी हैव टू स्टेट एन एक्सप्रेशन. चेक दिस वन आउट. स्टेट एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स F experienced by the rocket in terms of thrust force T and weight of the rocket. तो आप मुझे ये बताइए, as I have drawn that diagram, engine's thrust force is T, that is in the upward direction. Weight of the rocket is downward. ठीक है, ये आपके पास weight है. So what would be the resultant force? Resultant force is tension. Basically rocket आपका upward accelerate कर रहा है, so हम लोग कह सकते हैं कि tension is upward, weight is downward, so tension minus weight. So we have to just state an expression that F resultant is equals to tension minus weight of the rocket. ठीक है. उसके बाद वो कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द रॉकेट. सो कैलकुलेट द मास ऑफ द रॉकेट के लिए हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कैलकुलेशंस करनी है इसकी मास की, तो you can simply state the same expression. F is equal to thrust force minus weight of the rocket. ठीक है. अब आपके पास thrust force किसके बराबर है? डेरिवेशन है. अब thrust force हमारे पास आई थिंक सो अपने पास यहाँ पे गिवन है कुछ डाटा. सर फोर्स दी. हाँ सॉरी, फोर्स कितनी है मैं यहीं से ढूंढ रहा हूँ. ग्राफ के नीचे दी हुई है. आप थ्रस्ट दी हुई है या फोर्स. हाँ ये सॉरी 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 मैंने देखी थी, बट थ्रस्ट फोर्स आपके पास 16 न्यूटन है. ठीक है, थ्रस्ट फोर्स आपके पास कितनी है? 16 न्यूटन है. तो अगर हम इसको 16 न्यूटन लिखेंगे तो इट वुड बी 16 न्यूटन माइनस m इंटू जी. अब आपने मैथ कैलकुलेट करना है. सो मैथ वाले सारे वेरिएबल्स को एक साइड पे लेके आ जाइए.
MA plus mg, that would be equals to 60 न्यूटन। यहाँ से इसको मैन के A plus B that is equals to 16 5 मीटर पर सेकंड। अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अच्छा, द सिचुएशन इज दिस वन, व्हाई डू वी हैव नंबर शो दैट, बिकॉज इफ सो हमारा आंसर यहाँ गलत भी हो जाए, नो इश्यू, आप इसको यूज करेंगे, ठीक है, आगे वाले पार्ट में। सो अगर आपने नहीं भी कैलकुलेट किया था वहां पे, आप यहाँ पे एक ही वैल्यू यूज कर सकते हैं। सो योर मैथ्स विल बी इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 55 प्लस 9.81। सो तौसीफ बताइए क्या आंसर आएगा। सबाहत आप भी कैलकुलेट कर रही हो। 0.246 0.246 kg। तो 0.246 kg इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम हमारा आंसर जाना चाहिए टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो वी हैव टू राइट 25 दैट m is equals to 0.25 kg। गॉट इट, क्लियर है। जी सर। ओके, आप भी क्लियर है बच्चे। ओके, जस्ट मैं एक चेक कर लूँ, मेरा ख्याल है कुछ टेक्स्ट आप लोगों का आया हुआ है। नहीं, ये एएस का है बेटा, ए लेवल्स का है, ठीक है। ये मुश्किल लग रहा है। हैं? हेलो, ओके, आगे चलते हैं। मेरा नूर का माइक नहीं चल रहा। ठीक है, लेवल यानी आगे चल के चीजें सारी सेटल डाउन हो जाएंगी, डोंट वरी, राइट। जस्ट देखते जाओ क्या होता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जस्ट इट विल टेक टाइम, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ओके, तो नेक्स्ट तौसीक, एट टाइम t is equals to 0.30 second, a small piece of the metal is uh, separates from the rocket, ठीक है, वो वहां से निकल गया। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द रॉकेट above the ground at time t is equals to 0.3 seconds, ठीक है। अब आप देखो, हमारे पास उसने ये बोला हुआ है कि at time t is equals to 0, सॉरी, S is equals to UT plus half AT square. oh good, reason? टाइम दिया हुआ है सर। हाँ, s is equals to ut plus 1/2 at square। ये आप लोग लगाएंगे तो सही, लेकिन आपके पास यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन के थ्रू जाएं, तो व्हाट इज द इनिशियल स्पीड व्हेन द रॉकेट स्टार्ट्स टू मूव। आपके पास एक और भी ऑप्शन है, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि 3 सेकंड में रॉकेट कितना ऊपर जाएगा। हम एरिया अंडर द ग्राफ भी ले सकते हैं, है ना। डिस्टेंस, हाँ जी। सो s is equals to 0 plus 1/2, आपके पास एक्सेलरेशन कितना था 55, और टाइम आपका है 0.3 स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करें। जब तक मैं इसका एरिया अंडर द ग्राफ वाले पॉइंट से भी लेके आता हूँ, तो एरिया अंडर द ग्राफ वुड बी सेम थिंग, आई थिंक। एरिया अंडर द ग्राफ आपके पास क्या होगा, इट वुड बी 1/2 बेस टाइम्स हाइट, है ना। जी सर। तो 1/2 बेस इसका है जी 0.3 सेकंड्स पे 16.5, 16.5। ऐसे ही है ना। जी सर। करो जरा सॉल्व, एक ही जितना आंसर आना चाहिए हमारे पास। जी सर। दोनों का सेम आंसर आ रहा है, तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास, जी 2.475। क्या आंसर आया, 2.4
75। तो इसको भी हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, so it would be 2.5 meters again. So इसकी हाइट कितनी हो गई हमारे पास 2.5 meters. Got it? जी क्लियर है? ओके उसके बाद वो कह रहा है the speed at which the piece of the metal strikes the ground. तो ये थोड़ा सा आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ द रॉकेट सॉरी स्पीड ऑफ द पीस बाय विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. तो बेसिकली वो जो पीस वहां से लीव किया उसने, इट विल कम बैक टू द ग्राउंड, तो नॉट जीरो. सो सबसे पहले क्या होगा, आप देखें अगर आप इसको एनालाइज करें तो लेट्स से हियर इज द रॉकेट, ठीक है, एंड एक पीस ऑफ मेटल हमारे पास अगर यहाँ से इससे रिमूव होता है, तो सपोज दैट इज पीस ऑफ मेटल. तो ये पीस ऑफ मेटल इसकी भी तो वेलोसिटी उतनी है ना जितनी 16.5 मीटर्स पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, ऐसी है ना, एट 3 सेकेंड्स. तो ये सबसे पहले जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी जो स्पीड है वो 0 होगी, फिर ये वापस नीचे आएगा, ठीक हो गया, ग्राउंड पे आके टच करेगा इधर दिस वे. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको ना दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. अब दो हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि इसकी इनिशियल स्पीड u is 16.5 and v is 0. So how much distance is covered? उसने बोला भाई speed by which it is reaching over here. तो अगर आपके पास ये हाइट, आपके पास ये हाइट गिवन है, ऐसे ही है ना, अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट की, व्हाट वाज दैट हाइट? दैट हाइट वाज 2.5 मीटर. ठीक है, हम अगर किसी तरीके से ये वाली हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस वन, तो उसके बाद फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी. ये हाइट कैलकुलेट करने के लिए आप रॉकेट का ये वाला हिस्सा देखिए, ठीक है, ऐसे ही है ना. अब जब ये पीस ऑफ मेटल यहाँ से फ्री हो गया, तो इट वुड हैव अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम लोग फ्री फॉल कहते हैं. ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर सबसे पहले हाइट के लिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं. हाइट के लिए कैलकुलेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? वी विल हैव द कैलकुलेशन लाइक 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. अगर मैं कर लूं तो 2 टाइम्स 9.81 टाइम्स हाइट इज इक्वल्स टू 0 माइनस, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन माइनस होगा तो आई विल टेक अ नेगेटिव साइन. तो u आपके पास रॉकेट की कितनी थी? 16.5. तो 16.5 का होल स्क्वायर कर लो, तो ये आपके पास यहाँ से हाइट कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? 16.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 9.81. तो ये वो हाइट है जो रॉकेट ने ट्रेवल की अबव द ग्राउंड, सॉरी इस मेटल पीस ने ट्रेवल की अबव द ग्राउंड आफ्टर बीइंग रिलीज. सो व्हाट विल बी द हाइट? यस बताइए 13.9. कितना? 13.9. 13.9 मीटर्स आपकी ये हाइट हो गई. सो 13.9 इज दैट हाइट और 2.5 आपकी ये हाइट है. तो टोटल अब जो रॉकेट मतलब अब जो आपका मेटल का पीस वापस आकर हिट करेगा ग्राउंड को, सो एट दिस पॉइंट लेट्स से ये आपका मेटल का पीस यहाँ से रिलीज हो रहा है एंड इट इज कमिंग डाउन. तो जब ये नीचे आ रहा है यहाँ पे आके हिट करेगा, तो मेरे पास इसका यहाँ तक इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, यहाँ पे फाइनल स्पीड आई हैव टू कैलकुलेट, और टोटल जो हाइट है that height is now 13.9 plus 13.9 plus 2.5, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 16.4 है जी. ऐसे चेक करिए जरा. जी सर. ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इसने इतनी हाइट ट्रेवल करनी है. सो अब आपके पास अगेन आपका जो फॉर्मूला लगेगा दैट वुड बी सेम एज s इज इक्वल्स टू ut, सॉरी 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. अब आप लगा सकते हो. तो जब आप ये फार्मूला लगाओगे 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9.81 बिकॉज नाउ इट इज ड्रॉपिंग डाउन, और हाइट आपके पास होगी 16.4
इज इक्वल टू वी स्क्वायर आपने मालूम करनी है, यू स्क्वायर आपका 0 है। सो जस्ट आप इसका वी कैलकुलेट करने के लिए ये जो भी नंबर आ रहा है ना इसका मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट ले लो। 17.9 17.9 which is almost 18 मीटर। आपके पास कितना है जी? 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो अब आंसर में लिखोगे 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया? इज दिस क्लियर? ये काइनेमेटिक्स का आपका पोर्शन ऑलमोस्ट इट इज डन। इसमें कोई क्वेश्चन है पूछने वाला तो बता सकते हो, पूछ सकते हो। यस तौसीक, नहीं नूर, नूर आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? नो। ओके गुड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इज स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। यस, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट? नूर बताओ ना सम जरा। ऑफ हाँ ठीक है। मैं बता दूं फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, sum of clockwise moments is आप equals बता to दो। sum of anti-clockwise moment in a closed यस, नहीं इन अ क्लोज सिस्टम नहीं लिखना। फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्लोज सिस्टम इज बेसिकली फॉर मोमेंटम। सर फॉर अ बॉडी टू मोमेंट्स ही बी इन है इक्विलिब्रियम sum of clockwise movements is equals to sum of anti-clockwise movements। सर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ही पूछा उसने। हाँ ये मोमेंट्स है, मोमेंटम नहीं है। अच्छा मोमेंटम याद, हाँ चलो एक लेकिन चीज याद वहां हो क्लोज सिस्टम नहीं लगता, मैं ये कह रहा हूँ क्लोज सिस्टम इज यूज फॉर मोमेंटम। यस, हाँ। सो फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू sum of anti-clockwise moments, sum of anti-clockwise moments। ठीक है, ओके। ये आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हमारे पास एक छोटा हॉरिबल टाइप क्वेश्चन है। अ हॉलो प्लास्टिक स्फीयर इज अटैच, ये फ्लोट वॉल का क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी। अब आप देखो ये क्वेश्चन कितना मेन बिल्कुल डेली लाइफ से उसने उठाया हुआ है। हॉलो ball is connected with one end of the bar. The sphere is partially submerged into the water, and a bar is attached to a fixed vertical support by pivoted at this. तो हमारे पास उसने क्या बोला हुआ है, ये आपका पिवट पॉइंट है, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज 0.29 मीटर। ठीक है, बार से इसका डिस्टेंस है, आप यूं समझ लो कि ये डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस आपका कितना है? 0.29 मीटर है। सही है, बात समझ आ रही है? ये अब देयर इज 40 डिग्री इंक्लिनेशन ऑफ दिस सिस्टम विद हॉरिजॉन्टल। तो आपको बोल रहा है द स्फीयर हैज द वेट ऑफ what is the weight of the sphere? Sphere has a weight of 0.3 Newton. The distance from point P to the center of the gravity of the sphere is 0.29 meter. ये भी हम लोगों ने देख लिया। Then assume that the weight of the bar is negligible. ये assumption है इस क्वेश्चन की, आपने उसके वेट को नहीं चुना। Calculate the moment of the weight of the sphere about point P. तो आपने क्या करना है? वेट का वो निकालना है, मीन वेट का मोमेंट निकालना है। तो बताइए जी, वेट का मोमेंट निकालने के लिए वेयर विल बी द वेट ऑफ दिस बॉडी? आपका वेट का कंपोनेंट इधर आएगा, इजंट इट? जी सर। ये आपका वेट है। तो अब वेट के साथ ये बात याद रखो, दिस 2.9 इज नॉट परपेंडिकुलर। कंपोनेंट निकालना है जो कि पिवट के साथ क्या कर रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो मुझे एक्चुअली इस डिस्टेंस यहाँ पे
90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री का डिस्टेंस चेक करना है. सो व्हाट विल बी दैट डिस्टेंस? ये आपके पास 0.29 का cos थीटा हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही है ना? That will be 0.29 cos theta. So moment will be equals to, what will be the moment? Moment will be equals to F into D. So F आपके पास weight है and D is your D cos theta. So weight is your 0.6 Newton. Yes, weight कहाँ पे given था? Weight was 0.3 न्यूटन. 0.3 न्यूटन और डी आपके पास है 0.29 और कॉज आपके पास कितना है? 40. ठीक है, ये कैलकुलेशंस करो जल्दी से, शाबाश. क्या आंसर आएगा? 0.06. 0.06, बस यही आ रहा है. 0.067 न्यूटन मीटर. यूनिट ऑफ द वेट इज 0.067 न्यूटन मीटर. तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करके आपका आंसर ऑलरेडी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.067 न्यूटन मीटर. ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है सारा? जी ठीक है. सर, मैंने एक वैसे बात पूछनी थी. यस, सॉरी, दोबारा बोले. सर, वो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. हाँ, तो क्या कह रहे हो? हाँ जी, और सेकंड लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है. ठीक है, आगे चलें. जी. कह रहे द सिस्टम shows a figure 3.1 system shows figure 3.1 is a part of the mechanism that controls the amount of water in a tank. मैंने आपको कहा ना ये फ्लोट वॉल का बना रहा है tank. The water enters the tank and causes the sphere to rise. This results in the in horizontal. यहाँ पास क्या होता है? Horizontal. And now this is that system of the first level, and that brings the height of 0.07 या गैप दिया हुआ उसने. ओके, और ये 0.29 मीटर एज इट इज हमारे पास डिस्टेंस है. कह रहे कि इन दिस पोजीशन the rod are exposed to compress a horizontal spring and that controls the water supply as पानी बंद कर देता है. ठीक है, तो आप बोल रहे हैं